Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari, and I welcome you back to another fantastic episode of Contour Cast, Podcast for Life, Season 3. क्या आपकी कभी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है जिसकी हायरिंग हुई हो एक कंपनी में और पहले दिन से ही उससे उम्मीद रखी जाए कि वो एक क्राइसिस को सॉल्व करेगा? I had the pleasure of talking to a person who is with me on the hot seat today. He belongs to Sialkot. He's an absolutely doting father, a very, very competent professional, and there are many more stories to his life. I welcome to the hot seat Arfan Beg. Arfan, Assalamu alaikum and welcome to the hot seat. वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। You're very, very welcome. तो ये वाकई में आपके साथ हुआ और उस दिन भी जब मैं सुन रही थी मैं बड़ी हैरान थी कि पहले दिन आपकी हायरिंग हुई कॉन्टूर में एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक ओवर फ्रॉम समबडी जो अगले दिन ही जा रहे थे। Yes. ये क्या कहानी है? So I joined Contour in 2015, Uh-huh. and when I was about to join Contour, I was told कि भाई आपकी टीम में 2 लोग हैं। Yeah. But when I joined Contour, the next day we were still 2 people in the team. Okay. तो जब मेरा पहला दिन था Contour में, उसी दिन मेरे टीम लीड का आखिरी दिन था। It was his last working day at Contour. अच्छा. So that's what happened. Or he didn't tell me कि भाई it's my last day. अच्छा. Or he scheduled a domain transfer session for me. अच्छा. But it never happened Okay. because the next day we were still again 2 people in the team. Right. तो हुआ यूं कि जो मेरे दूसरे टीम मेंबर थे ही वाज जूनियर और हम दोनों के पास डोमेन नहीं है एंड वी वर काइंड ऑफ Lost and confused? लॉस्ट इन कंफ्यूजन कि भाई व्हाट हैपेंड। हाँ. और बेसिकली हमारी जो प्रोडक्ट है इट वाज अ यंग स्टार्टअप एट द टाइम व्हेन आई जॉइंड कंटूर। ठीक है. It was in its initial phases, Okay. or we were still trying to develop features so that our clients can use them. ठीक है. लेकिन we were not generating any revenue. We were still throwing money into it, Right. and we could not afford more people. अच्छा. Or down the road, we had to put extra hours. We had to sit late Okay. to complete our assignments, Right. and just to be able to we are able to add the features clients are looking for. Right. So basically हुआ ये कि when we were almost 70% done with the feature set, there was a roadblocker for us or a bad news for us कि we were actually developing this software in Silverlight. अच्छा. Microsoft decided that they are not going to support Silverlight in Apple's Safari browser. Okay. So what happened is we were kind of thrown with the brick. Right. We are still trying to figure out that we are making progress and we are now Right. making the features the clients are looking for, but we were kind of stuck in a situation that most of our clients who are actually using Apple won't be able to use our software. Right. Because Microsoft decided not to support Silverlight in Right, Apple right. anymore. So what we did is we forked an open source code of Safari browser so that we can embed our applications logic or the endpoint Okay. in the browser so that the clients can still use our application, Very right? smart. So we planned that. Okay. And once we are done with this, Microsoft then announced that they are going to sunset the Silverlight technology altogether. ठीक So है. they decided to discontinue it. And again, we were still developing features, ठीक है. right? We were still trying to make our product, complete our product Right. in terms of feature set, ठीक है. right? And now we were in a situation that we were told that we have to rewrite the product in the new technology, Oh boy. right? And the new technology जो उस वक्त थी we chose AngularJS and ठीक है. और उसमें भी ये था कि it was still in beta version. ठीक The है. Angular the technology that we thought we will use for rewrite, it was still in beta version. ठीक है. And we didn't know the technology itself because we never got a training on the technology as well. Okay. Right. So most of our colleagues in onshore team or in other divisions, because Jonas is big, they have other divisions as well. बिल्कुल. They have other verticals as well. Right. So they told that you are set for failure. You won't be able to do it Right. because most startups fail in general, and now you are in a situation that you are not generating revenue and you are still investing money into it, and you are telling us that you have to rewrite this software from scratch. फिर तो फिर हुआ यूं कि we needed more resources because it was a huge product, right? So we were just 2 people in Lahore,
and there were few resources in Toronto as well. They were working with us. Acha. There were few developers, and there was only one QA at that time in the Okay. team. So if you think you have to rewrite the product from scratch, Huh. and you have only 2 developers in Lahore and one or 2 developers in Toronto, you have one QA. How you are going to do that? Okay. Because we have to kind of dedicate a team for rewrite, as well as we have to dedicate a team for Testing. developing new features Yeah. and maintain the existing product Yeah, as well. yeah. Because there were existing customers who were using our product already, so we Bilkul. didn't want to put a pause on maintenance or put a pause to develop the feature set, right? So we decided to hire more people, right? Okay. Which we could not afford at that time, right? Okay. We were not making any money, and we still had to hire more people in the team. I contacted a couple of my ex-colleagues from my ex company, Right. because we had good working relation in our previous company, and I had known them for 4 to 5 years, because I spent around 6 years in my previous company as Right. well. So I talked with my ex-colleagues and tried to pull them in our team, and they came. I was so Okay. lucky, and they were so diligent, so dedicated with this task of rewrite, that we did it within a year. Fantastic. And as I think there is a popular saying of Nelson Mandela, that everything is impossible unless someone tries or does it. So we did Yes. it, and it was good news for everyone that we have pulled it off in time. And that too, while we were still struggling with our resources in terms of finance, Right. and also in terms of feature set, that we were still struggling to complete our feature set, which our competitive products were offering, because there were so many competitors in this industry. So we wanted to stay on track, Right. stay on our toes, and continue to get more clients, so that we are able to one day be able to generate the revenue. Arfan, what a fantastic story and what a धमाकेदार entry into Contour. अब तो 9 साल हो गए हैं आपको माशाल्लाह से, but honestly, I doubt कि there are very few people who would have this kind of story कि जी हमारी शुरुआत ही एक कंपनी में इतने challenging situation में हुई, and you did brilliantly well. And I know there are many other challenges that you faced also. Something to do with the browser also, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे. Lekin, I would like to first ask you, you told me it's something very interesting. You work in Contour. You are part of the software industry. You are doing immense work which benefits so many people. लेकिन हर चीज़ की शुरुआत कहीं से होती है, और आपकी भी शुरुआत हुई थी, और आईटी से आपको कोई लगाव नहीं था और कोई दिलचस्पी नहीं थी, और आपका ध्यान तो कहीं और था. वो ध्यान कहाँ था और ये शिफ्ट कैसे आया? अच्छा, यूँ था थोड़ा सा कि I always wanted to be an engineer, ठीक but है. I never knew कि भाई कौन सा engineer बनना है. ठीक But है. it was definitely not a software engineer. अच्छा. But I kind of started loving computers when I used to see those shiny screensavers in computer lab in my school through the glass windows. Though I was not a computer student, so I was not allowed to enter the lab, but I Right. used to see what computer is. Mhm. So I didn't have computer at home as well. So just out of this fascination and this shiny stuff, और उन दिनों विंडोज एक्सपी नई नई लॉन्च हुई थी, तो उनके तो बहुत ज़्यादा ही कलरफुल ग्राफिक्स थे. बिल्कुल. So I used to see those things from the glass window outside the computer lab. तो मैट्रिक में मैंने केमिस्ट्री तो पढ़ी थी, because I wanted to be an engineer. So I was always kind of planning to get admission in UET in some engineering, whether Okay. it's electrical or mechanical or Right. chemical, whatever. But I just knew कि भाई I want to be an engineer. But अच्छा, उसमें हुआ यूँ कि फिर I studied computer science instead of chemistry. Or once I was done with my inter, हाँ. and then I as I was planning already, because I want to be an engineer, so I appeared in an entry test at UAT, अच्छा. where I did really good. But to my surprise, I was not eligible for admission in UAT, because I did not study chemistry. Mhm. So I didn't know what to do now. हाँ, because So उस वक्त तो you went with a different mindset ना? exactly. हाँ. और उसके बाद क्योंकि मैंने कंप्यूटर ही पढ़ा था, तो आई थॉट कि क्योंकि कंप्यूटर ही पढ़ा, तो वाई डोंट आई परस्यू अ डिग्री इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो दैट्स हाउ आई एक्चुअली एंटर्ड और Started your journey. और ज्वाइन द कंप्यूटर साइंस डिग्री. ये बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि
बड़े होते हुए हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, हमें जो चीज़ अच्छी लग रही होती है हम उसकी तरफ रुख करते हैं, एग्जैक्टली। राइट? और फिर यकदम ही है, जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने हु वुड हैव थॉट कि एक स्क्रीन सेवर आपको फैसिनेट और इंस्पायर करेगा। और वंडरफुल। जी, जी, प्लीज़। just to add a little bit more to this story just for our youngsters. हाँ, So I think all the youngsters should do whatever they love. I loved computer, that's why I did adopt computer राइट, subject instead of chemistry. ठीक, Or I could not imagine at that time how computer will benefit me in future. राइट, But here I am connecting those dots along the road, and now I see that I actually made a right decision at that time to take computer subject instead of chemistry, because most of my friends हाँ, or the friends who lived in my neighborhood, हाँ, who completed their degrees in electrical or mechanical engineering, Mhm. those are the kind of high profile engineering in UAT that were being offered at that time. They completed their degrees, but they were not able to get good or high paid jobs at that time, because there are not so many opportunities इंजीनियर्स के लिए। in Pakistan. हाँ, Yeah, so I was lucky enough in that sense, because I didn't know at that time कि भाई कि अगर ये मैं फ्यूचर है। फ्यूचर ये है। और अभी आई थिंक इफ आई थिंक अबाउट इट राइट नाउ एंड कनेक्ट द डॉट्स, आई थिंक आई मेड द राइट डिसीजन। आपने बहुत अच्छी बात की कि उस वक़्त हम नुक्तों के दरमियान एक जो है ना कोई शेप नहीं बना पाते हैं, कनेक्टिंग द डॉट्स को लिटरली अगर ट्रांसलेट करो तो हमें वो समझ नहीं आ रही होती है कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। बिकॉज़ इमोशनली यंग होते हैं, हम इमोशनली ड्रिवन ज़्यादा होते हैं, नालां जल्दी हो जाते हैं, मायूस जल्दी हो जाते हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ एहसास होता है कि हर चीज़ का एक मकसद होता है और मसलहत होती है, राइट? सो आपने चूँकि अभी मेंशन की कि मेरे साथ के जो पियर्स थे, तो 7 से मुझे याद आया कि आप लोग तो शायद 7 बहन-भाई भी हैं, यस, माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप 5वें नंबर पे हैं? यस। 5वें नंबर पे हैं आप, ज़बरदस्त। तो 7 बहन-भाई और आपके वालिद साहब चूँकि ज़िंदगी के अपने काफ़ी अरसा, काफ़ी दौरानिया बाहर भी रहे, तो आपका बचपन 7 बहन-भाइयों के साथ कैसा था? अच्छा, हम लोग बेसिकली फैमिली होम में, जॉइंट फैमिली होम में रहते थे। ठीक है। और हम 7 सिबलिंग्स थे, और सिर्फ हम ही नहीं थे, हमारे साथ 2 फैमिलीज़ और भी थी, मेरी फूफा और मेरे ताया के बच्चे। वी अच्छा, यूज्ड टू लिव इन सेम होम। अच्छा, और उसमें काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं, क्योंकि आई वाज़ काइंड ऑफ यंगर अमंग अच्छा, ऑल ऑफ दोज़ सिबलिंग्स ठीक है। और कज़न्स। अच्छा, तो उसमें ये था कि जितने भी बड़े थे, उसमें ये होता था कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो अरेंज किया करते थे। ख़ास ठीक है। तौर पे 23 मार्च हो गया या 14 अगस्त हो गया, घर में हाँ, झंडियाँ लगाना और घर को सजाना। और ख़ास तौर पे 23 मार्च या 6 सितंबर को जो कायद के मज़ार पे जो गार्ड्स की जो चेंज की सेरेमनी होती है, जी, जी, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे हमेशा, और सुबह-सुबह सारे उठ के फिर टीवी के सामने बैठा करते थे, क्योंकि राइट, पीटीवी यूज्ड टू होस्ट दैट सेरेमनी लाइव। बिल्कुल। तो उसके अलावा वी यूज्ड टू हैव बिग ये बैकयार्ड लकीली। तो अच्छा, जितनी भी गेम्स जो थी, क्योंकि हम सिबलिंग्स भी काफ़ी थे और कज़न्स भी थे, हुँ, तो हमें फिर ये होता है कि घर में नहीं खेलें, बैकयार्ड में जाके खेलें, वहाँ पे जो हाँ, भी काम करने हैं वो कर लें। तो वहाँ पे हम क्रिकेट भी खेलते थे, बैडमिंटन भी, और भी बहुत सारी जितनी भी गेम्स यू कैन इमेजिन, वी यूज्ड टू प्ले ऑल दोज़। हुँ, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ याद है कि फ़ास्ट बॉलिंग का मुझे बहुत शौक था, क्रिकेट भी सब लोग खेला करते थे। तो फ़ास्ट बॉलिंग करवाने की कोशिश में या ज़्यादा तेज़ बॉल फेंकने की कोशिश में इतनी तेज़ बॉल फेंकता था कि इट डिडंट यूज़ टू टच द ग्राउंड, ओह! और बैट्समैन के सर से ऊपर से गुज़रती हुई जाया करती थी। तो क्योंकि क्योंकि मैं इस तरह के काम करता था, तो आई देन हैड टू सेटल फॉर स्पिन बॉलिंग, और या फिर मुझे बॉल दिया ही नहीं जाता था, या फिर मुझे कहा जाता था कि आपने अच्छा, फास्ट बॉल नहीं करवानी है। अच्छा, सही, सही। तो इस तरह के काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि मेरे ख्याल से जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से ही थे, और कज़न्स भी थे साथ, तो फिर बहुत हुँ, सारा हल्ला गुल्ला भी होता था। तो काफ़ी एनर्जेटिक किस्म का हमारा एक्सपीरियंस रहा था चाइल्डहुड में। और ख़ास तौर पे हमारे जो मेरे जो फादर हैं, वो 71 की वार में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। ही वाज़ अच्छा, काइंड ऑफ इन्वॉल्वड इन ग्राउंड कम्युनिकेशन। ओके, तो वो अक्सर में फिर वो मेडल भी दिखाया करते थे, अभी भी मौजूद है, प्रीशियस मेडल जो अभी भी हमें दिखाते हैं। वी जस्ट सी एंड गेट मोटिवेटेड कि हमारे जो फादर थे, ही पार्टिसिपेटेड और वाज इन्वॉल्वड इन वार, इन 71 वार, और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया फॉर दिस कंट्री। वंडरफुल, दैट्स वेरी, वेरी नाइस एंड आई एम श्योर कि उसकी वजह से एक बच्चों को वैसे भी फ़ैसिनेशन होती है जब 14 अगस्त और 23 मार्च हो, लेकिन अगर आपके वालिद साहब ने खुद भी ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज़ ऑल द पीपल जो कि किसी भी कैपेसिटी में फोर्सेस में काम करते हैं, दे डेफिनिटली डूइंग मोर दैन व्हाट रेगुलर पीपल डू, दे रिप्रेजेंटिंग द कंट्री।
आपने वालिद का जिक्र किया, आपका बचपन एक टिपिकल बचपन नहीं था वालिद के हवाले से, क्योंकि आपके वालिद साहब फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए इटली चले गए थे और तकरीबन 20 साल बाहर रहे। सो आई एम श्योर कि उनकी मेहनत वो हमें नज़र ही आ रही है, एज यू आर डूइंग वेल, आई एम श्योर योर सिबलिंग्स ऑल्सो। तो किस तरह का डायनामिक था आपके घर में, जब एक तो इतने सारे बहन भाई और वालिद भी दूर, तो क्या वालदा के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी? बिल्कुल ऐसे ही, माई मदर वॉज हाउस वाइफ, अच्छा, लेकिन व्हेन आई वाज इन ग्रेड 3 तो माई फादर हैड टू मूव टू इटली जस्ट टू सपोर्ट अस फाइनेंशियली. ठीक है, So my mother was protective as all mothers are, ठीक। but she has to be strict as well, अच्छा, just to स्ट्रिक्ट भी keep थी। us on, just to keep us on track, ठीक। or just control us. और उसमें थोड़ा सा ये था कि she delegated the responsibility to my elder brother as well, कि भाई इनको कंट्रोल करो थोड़ा सा. और फिर थोड़ा सा सख्ती भी थी अम्मी की तरफ से, और मेरे ख्याल से शी वाज डूइंग इट राइटली, ठीक। और उसका हमें फ़ायदा भी हुआ. तो और हमें फिर घर से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं मिलती थी कि भैया को बिला वजह नहीं जाना. अगर आपने साइकिलिंग भी करनी है तो यूज़ योर बैकयार्ड. तो आई अच्छा, यूज़ टू शहर में ही। राइड साइकिल, और मैंने वहीं पे सीखी और वहीं पे चलाई, बाहर चलाने की इजाज़त नहीं मिलती थी. शी वाज़ सो प्रोटेक्टिव. ठीक है। और मेरे ख्याल से आई वुड लाइक टू टेक अपॉर्चुनिटी टू थैंक माई मदर. Whatever she did, I don't have words to thank, or especially my father as well, because so many sacrifices he did बिल्कुल। just to support us financially. So I don't have words to सो आपने अपने बचपन का बताया और आपका बचपन बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा है गुजरा। साथ तो आप ही लोग थे, कज़न्स मिला के कोई 12-15 बच्चे हो जाते होंगे। अब आपके माशाल्लाह अपने 3 हैं। योर एल्डेस्ट इज़ इन ओ लेवल्स एंड योर यंगेस्ट इज़ 3 इयर्स ओल्ड। व्हाट इज़ पेरेंटिंग लाइक नाउअडेज़? इज़ इट डिफरेंट एंड डिफिकल्ट और जस्ट डिफरेंट? ओवरऑल काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी, और ख़ास तौर पे जो स्क्रीन टाइम है, हुँ, अ, वो मेरे ख्याल से काफ़ी एक ऐसी अहम चीज़ है जिस पे हमें कंट्रोल करना पड़ता है. तो एज़ यू सेड, माय सन इज़ इन ओ लेवल्स. राइट, तो उसके साथ एक तो फ़ायदा ये है कि ही इज़ ग्रोइंग विद मी, राइट, एंड आई हैव ऑल दोज़ अपॉर्च्युनिटीज़ टू प्ले विद हिम, राइट, वेदर इट्स सॉकर और बैडमिंटन. ठीक। तो वो सारा कुछ है, और ही इज़ नो सेंसिबल इनफ कि भाई वी कैन नो फोकस ऑन आवर यंगर वन. हाँ, ठीक है. शी इज़ काइंड ऑफ फॉन्ड ऑफ साइक्लिंग. अच्छा, So I make sure I take her out every now and then, other than weekends as well, अच्छा, to take her to the park, and so that she can ride tricycle actually. आई So स्वीट। she's so sweet. Or she's kind of revival of hope and joy and happiness in our home, and kind of we are experiencing parenting once again, because राइट, the gap between my elder son and daughter and the younger daughter is kind of around 8 years. राइट, राइट। तो मेरे ख्याल से it's a new experience again for us. बिल्कुल, और आपने ज़िक्र ये भी किया था कि यू आर थिंकिंग एज़ एन एक्सपेरिमेंट टू होम स्कूल हर, तो Yes. उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है? Achha, we're kind of trying to experiment and learn from others as well in family ठीक है, who are doing this. So ठीक, we are planning to do homeschooling for our younger daughter. ठीक। तो उसका एंड सॉरी, एंड इज़ देयर लाइक एन एक्चुअल प्लान, और इज़ दिस समथिंग जो आप सिर्फ़ कुछ अरसे के लिए ट्राई करेंगे? so we'll try to do it for at least 7 years. अच्छा, That's what we plan. अच्छा, और उसके बाद आई थिंक दैट विल बी टाइम फॉर हर टू गो टू स्कूल, बिकॉज इट नॉर्मली ये होता है कि व्हेन योर चाइल्ड टर्न्स 3 or 4 वी पुश आवर चिल्ड्रन टू कि स्कूल. स्कूल चले जाएँ। हाँ, वो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है. बच्चों के लिए दिस इज़ देयर टाइम टू लिव देयर चाइल्डहुड विद देयर पेरेंट्स. ओके, और माँ बाप से ज़्यादा बेहतर इस एज के बच्चे से ज़्यादा बेहतर को ट्रीट नहीं कर सकता. आई थिंक पेरेंट्स आर, और द मदर्स हु आर इन आवर होम्स, जो वर्किंग मदर नहीं है, जिनको मेरे ख्याल से जो हाउस वाइफ्स हैं, दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन और टीच देयर चिल्ड्रन एट होम. आई थिंक दिस इज गोल्ड. वी शुड नॉट मिस this opportunity to spend more time with our children, and let them spend more time with us as well, and do not try to push them to school. इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग माइंडसेट, यू नो, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज़ माँ-बाप अपने बच्चे के लिए जो सोचते हैं वो बिल्कुल सही होता है। तो अगर कोई और सेट ऑफ पेरेंट्स बिल्कुल ऑपोज़िट सोचेंगे, वो उनके बच्चे के लिए, उनकी सिचुएशन के लिए बिल्कुल मुनासिब होगा। अच्छा, आपने बेटे का तो कहा कि आप उसके साथ सॉकर भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, लेकिन आप अपने ओन पे भी बहुत एडवेंचरस हैं। भई इस्लामाबाद उठ के आप चले जाते हैं ट्रेकिंग करने के लिए?
अच्छा, मेरा मानना है कि इससे पहले कि आपको डॉक्टर बोले कि आप सुबह उठ के वर्जिश करें या आप वॉक करें या आप ट्रैक करें, हमें खुद से ही कर लेनी चाहिए। तो कपल ऑफ इयर्स एगो आई स्टार्टेड गेनिंग सम वेट। अच्छा हिस्टोरिकली आई हैव बीन काइंड ऑफ लीन, अच्छा लेकिन इट हैपेंड कि हमारी रूटीन कुछ इस तरह से हो गई थी। ठीक है। वी यूज्ड टू वर्क लेट आवर्स, तो अच्छा उससे ये हुआ कि मैंने कुछ वेट गेन कर लिया, तो आई थॉट कि वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस। तो आई स्टार्टेड रनिंग इन द मॉर्निंग। तो अच्छा सुबह उठ के बच्चों को स्कूल छोड़ के तो आई यूज्ड टू गो टू पार्क, और फिर मैंने वॉक करना शुरू कर दी, फिर रनिंग शुरू कर दी। तो आई वांटेड टू टेक दिस टू नेक्स्ट लेवल। तो टीम मेंबर्स जो हमारे साथ हैं, मेरी टीम में 3-4 लोग ऐसे हैं, दे आर विद द टीम फॉर 7 और 8 ईयर्स। तो वी प्लान्ड दिस, और हमने सोचा कि हम ऐसा करेंगे, फ्राइडे नाइट को हम जाएंगे इस्लामाबाद, और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ेंगे फैसल मॉस्क में, एंड देन वी विल डू सम हाइकिंग और कवर सम ट्रेल्स। So we are doing this for a few months now, अच्छा and we want to take this to next level. We are planning to, prepare ourselves for the K2 base camp track. अरे वाह This is kind of, the track that will test your strength, Ability. mental abilities, and physical strength as well. बिल्कुल One thing that I like about trekking is when you are trekking and you don't want to go further, you have to go, because there is no one will help you or lift you from there. बिल्कुल। You have to keep pushing. Uh, you have to actually test your physical ability and mental strength. तो ये चीज़ मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग से आती है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने में, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो, इसको बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाना जो है, उसका भी मकसद यही है कि वी एक्सप्लोर आवर कंट्री। क्योंकि इस्लामाबाद इज काइंड ऑफ ब्लेस्ड, वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं, बिल्कुल और मार्गला हिल्स, दे आर सो ब्यूटीफुल जी scenes as well. So we explore those trails, अच्छा as well as we are preparing for our next goal, which is K2 base camp track. और मेरे ख्याल से वो 180 kilometers है ट्रैक, और it takes around 2 to 3 weeks to cover. और उसके लिए काफ़ी हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। वी आर जस्ट बिल्कुल। प्रिपेयरिंग फॉर दैट। दैट्स फैंटास्टिक। बड़ा ही मल्टी पर्पस है, आपको अपनी सेहत का एहसास है। आपने बहुत प्यारी बात की कि इससे पहले कि खुदा ना खास्ता डॉक्टर किसी स्टेज पे आके आपको कहे कि आपको मस्ट वॉक करना है, इंसान खुद जिम्मेदारी लेना अपनी सेहत वी का। नीड टू बी प्रोएक्टिव ऑन दैट। एब्सोल्युटली। प्लस इट इज अ स्पोर्ट ऑल्सो इन अनदर वे। एंड तीसरी बेहतरीन बात आपने की कि पाकिस्तान एक्सप्लोर करने का और खूबसूरत मकामात देखने का आपको मौका मिलता है। ऐसे सारे शौक पूरे करने में ज़रूर पीछे एक अच्छे और सपोर्टिव स्पाउस की ज़रूरत होती है। So your spouse seems to be quite understanding because you are doing something which is wonderful, but then she also has to take care of the home and the kids while you are away, work-wise also and leisure-wise also. So what is that dynamic like? मेरे ख्याल से आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक फॉर सपोर्ट इन all the areas of my life, whatever it is, whether it is work or a trip with my friends. I have a habit of hanging out with friends a lot, Acha. and this is all because of her sport. Okay, I'm able to do that. I'm still connected with my friends or ex-colleagues from my first job as well, which is Acha. 17 years back. Back. I still connect with them. I still hang out with them. ठीक This is all because my wife supports me, and she Acha. pushes me to do this. Acha. Right. Interesting. So मेरे ख्याल से a good spouse is a blessing for you, and I'm so blessed to have her. Oh, that's wonderful. I don't have enough words to thank, so I will just say thank you. Oh, that's wonderful. When she is so supportive, I'm sure you are also. Is there anything special that she likes जो आप उनके लिए करते हैं? She likes shopping. Okay. So whenever she wants to shop, I say yes. So I'm a yes man. Ah, that's nice. और शौक से आराम से चले जाते हैं Yes. आप साथ. बिल्कुल, चाहे it's a weekend or not, I'm always available. Always available. अच्छा, हेल्थ कॉन्शियस है लेकिन खाने का भी शौक है, और टकसाली गेट का तवा चिकन ये आपके पूरे दफ्तर को मालूम है कि आपको पसंद है। इसकी क्या स्टोरी है? अच्छा, 2007 में मेरी पहली जॉब थी। अच्छा। तो उस टाइम ये होता था, वी वर काइंड ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स, और 9 to 6 टाइमिंग होती थी, और हमारे जो टीम लीड थे, ही वाज काइंड ऑफ एनर्जेटिक, और ही वाज काइंड ऑफ फूडी पर्सन। तो उनके साथ भी हम क्या करते थे, 6 बजे घर जाने को तो दिल नहीं करता था, 6 बजे छुट्टी होगी, व्हाट वी विल डू। तो वी यूज्ड टू ट्राई सम स्ट्रीट फूड। तो उसमें स्पेशली टकसाली का ये था कि वी यूज्ड टू गो देयर एवरी
other week अच्छा. to try different recipes of tawa chicken from there. We have kind of so many exotic food options there. I think they deserve to be tested by all Pakistanis. तो उसमें ये होता है चाहे it's a summer evening चाहे it's a winter evening, you are eating spicy tawa chicken on rooftop. It's always a blessing. It's priceless, I Yeah. think. उसका So अपना ही we experience still है. remember and cherish those memories, those laughters that we used to have at that time. So it अच्छा. was quite memorable. बहुत सारी बातें हुई हैं अरफान, और अरफान में पहले दिन से ही शुक्र है कि सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़ जो है वो अदा कर रही हूँ आपके नाम का, बिकॉज़ आपका नाम इरफ़ान नहीं है और इफ़रान भी नहीं है, आपका नाम अरफान है. तो व्हाई अरफान एंड व्हाट डज़ इट मीन? Arfan means gratitude. It's basically an old Arabic name. Ah. Or I was never named Arfan. अच्छा. I was it's मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, इसमें बैक स्टोरी है थोड़ी सी. बिल्कुल तो बताइए. बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो अच्छा. अम्मी ने कहा कि आपकी बर्थ स्लिप जो है ना वो नहीं मिल रही, तो आप ऐसा करें बर्थ स्लिप की ना डुप्लीकेट निकलवा लें. अच्छा. तो जब बर्थ स्लिप निकलवाई तो सब सिबलिंग्स के नाम मौजूद थे, मेरा नाम जो था ना वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरा नाम फ़ारूक होता था उस टाइम. अच्छा. तो सब लोग फैमिली में फ़ारूक ही कहते थे और आई वाज़ लुकिंग कि भाई मैं कहाँ हूँ? तो उन्होंने बताया कि एक है नाम, उसका नाम है इरफ़ान बेग. तो वही है, अगर बाकी सिबलिंग्स के नाम मौजूद हैं, अगर आपका नहीं है तो फिर आपका नाम इरफ़ान बेग है. अच्छा. तो आई हैड टू काइंड ऑफ अटैच अ फोटोकॉपी ऑफ द बर्थ स्लिप विद द फॉर्म. अच्छा. मैट्रिक के जो एग्ज़ाम्स बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके साथ. तो मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं उसको सही करवा लेता, तो मैंने खुद ही वो उसकी फ़ोटोकॉपी करा के तो लगा दी फॉर्म के साथ. तो देन आई बिकेम इरफ़ान. और उसमें उर्दू में लिखा हुआ था इरफ़ान, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ था. अच्छा. तो मुझे लगा कि आई से नहीं मुझे लिखना चाहिए, आई शुड ट्राई डिफरेंट, और मैंने ए से इरफ़ान लिख के भेज दिया. तो ओह! उसमें जब मैं घर आया तो फिर अम्मी को बताई स्टोरी कि मैंने इस तरह किया है. तो उन्होंने बताया कि मैंने आपका नाम इरफ़ान रखा था, लेकिन आपके बाबा जो थे वो आपको फ़ारूक कहते थे. तो ओके. अम्मी ने तो यही लिखवाया हुआ था, लेकिन अब्बू अब्बू मुझे क्योंकि फ़ारूक ही कहते थे. तो फैमिली में सब लोग फिर मुझे फ़ारूक के नाम से अभी तक जानते हैं, लेकिन जो मैट्रिक के बाद के जो कलीग्स हैं या जो दोस्त हैं या जो क्लासमेट्स हैं, दे नो मी एज़ अरफ़ान. और उससे पहले के जो दोस्त हैं वो सब, वो फैमिली मेंबर्स भी जो ख़ास तौर पे वो मुझे फ़ारूक ही कहते हैं अभी तक. और अभी मुझे ये भी याद है कि कब शुरू में जब कोई दोस्त वगैरह आता घर, तो वो नॉक करता और कहते जी फ़ारूक इरफ़ान को बुला दें, क्योंकि ही यूज्ड टू बी माय क्लासमेट फ्रॉम 11 और 12th ग्रेड. तो घर से पता चलता कि उसको कि इरफ़ान तो नहीं रहता यहाँ पे. तो बाद में वो फिर थोड़ा इस तरह के मसले आते थे. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि इट इज़. और अभी भी, और क्योंकि मैंने इसका आई से नहीं लिखा था, ए से लिखा था, और आई डिडंट नो कि भाई इरफ़ान ए से भी होता है कि नहीं होता. तो लकीली मैंने बाद में सर्च किया तो इट आल्सो एग्जिस्ट्स, दिस नेम आल्सो एग्जिस्ट्स, कि आप ए से भी लिख सकते हैं और आई से भी लिख सकते हैं. दे आर बेसिकली टू डिफरेंट नेम्स. इरफान, उस दिन आपने एक बात कही रिलेटेड टू हायरिंग, which I found that is very important, almost profound बात, कि you need to be very particular about hiring, especially the kind of work जो आप करते हैं, because you're talking about something lifelong, right? Would you like to shed some light on why hiring is so important for you? What do you keep in mind? और फिर जब आप हायर कर लेते हैं, तो how do you manage your team? Right. So basically one thing that we look for in our new hires is long term commitment. ठीक है. इसकी वजह ये है क्योंकि हमारा जो काम है इट्स अ प्रोडक्ट. ठीक है. वी वांट टू हैव पीपल ऑन आवर टीम फॉर लॉन्गर टाइम. Mhm. क्योंकि प्रोजेक्ट्स में आमतौर पे ये होता है कि दे गो फॉर अ ईयर और टू, और देन दे आर फिनिश्ड, देन द टीम इज़ फ्री टू गो. ठीक है. लेकिन प्रोडक्ट में ये होता है वी वांट टू टेक पीपल इन द टीम हु आर विलिंग टू स्पेंड मोर टाइम विद अस. क्योंकि हमने इसकी डोमेन भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड होती है, और उसमें हमने न्यू हायर्स को ट्रेन भी करना होता है. वी इन्वेस्ट सो मच इन आवर न्यू हायर्स, Mhm. we want them to stay with us. So that's one thing we look for in our new hires, in addition to the tech stack that we use for our developing our product. Mhm. तो उसके अलावा जो टीम मैनेजमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे नज़दीक वो ये है कि आई ट्रस्ट माई टीम, ठीक है. आई गिव देम फ्रीडम, और आई अप्रिशिएट देम. ओके. ठीक है. अब उसमें ये होता है कि एप्रिसिएशन जो है ना उसको मैं आई यूज़ इट एज़ अ टूल so that my team can perform better. Mhm. So sometimes appreciation can work as morale booster as well for your बिल्कुल. team. ठीक है. तो मेरा ये होता है. और उसके बाद जो है क्योंकि जब मैं टीम में आया था Mhm. तो
I got the leadership role, or क्योंकि we were only 2 people in the team, Right. तो now we have around 25 people in the team. Right. तो उसमें फिर ये था कि I wanted to make more leaders. बिल्कुल ठीक है. I wanted to make leaders out of my team. Or now we have 4 leaders, whether it's QA, whether it's mobile development, whether it's automation. So in each field we have separate team leads now as well. ठीक है. ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि नो आई कैन कंट्रोल एंड मैनेज अ टीम मोर इफेक्टिवली. ठीक है. अच्छा, और मेरे ख्याल से लीडरशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एम्पैथी है. एम्पैथी इज़ समथिंग मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ लीडर. इट कैन मेक द लाइव्स ऑफ योर टीममेट्स ईजियर. ठीक है, give them leverage, or because they have all the issues that a normal human being can have. बिल्कुल. They have ups and downs in life. ठीक है, बिल्कुल. so a little empathy in a leader can make their team's life more easier. That's what I think. तो मेरे ख्याल से ये जो कुछ चीज़ें हैं ये मैं ख़ास तौर पे यूज़ करता हूँ अपनी टीम में. और मेरे ख्याल से आई इनहेरिटेड दिस ट्रस्ट थिंग फ्रॉम कंटूर एज वेल. दे ट्रस्टेड मी विद दिस डिवीजन व्हेन वी वर काइंड ऑफ स्टार्टिंग अप. Right. So they trusted me, or they gave me authority and control to hire and make my own team. ठीक है, तो I'm just trying to give back to my team and just add those values to my team members as well. Okay. They have the luxury of of authority Right. that they want to use, and the trust that we have developed within our team. So I just use those tools in my team, so Okay. that we can focus more on work. ठीक है, और instead of आराम से काम कर आराम सकें से फिर. काम कर लें बिल्कुल. and have more work life balance as well. Contour, you said trusts you, and I think that term is very important to understand. Trusting relationship हमेशा एक तरफा नहीं दो तरफा होती है. And trust क्या होता है? मौका देना. कि जो किया जाएगा, that will be the best decision forward. And I think it's safe to say that one of the best decisions that you took was to join Contour. 9 साल आपको यहाँ हो गए हैं. I'm sure the journey has been very, very fruitful and very wholesome. Other than flexibility and working hybrid model, कौन सी एक या दो चीजें हैं which make Contour stand apart for you? I think I will again say trust. They अच्छा. trust their employees and they give them authority to manage their own teams. अच्छा. And as divisions, because there are so many divisions in at Contour, Right. and they are not interconnected with other divisions, because Right. every division works with its own onshore team and own vertical. बिल्कुल. बिल्कुल. ठीक है, और they work in its own operating group as well. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल से जितनी भी डिवीजन्स हैं, दे हैव ऑल दी एवरी डिवीजन हैज़ इट्स ओन मैनेजर, ओन लीड, ओन मैनेजमेंट एज वेल. और उसका फ़ायदा ये होता है कि कंट्रोल जो है वो आपको माइक्रो मैनेज नहीं कर रहा होता. तो वो ये जो चीज़ है कि आप जैसे, क्योंकि आमतौर पे कंपनीज में होता है जो टॉप मैनेजमेंट होती है, दे ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन टेक्निकल स्टफ एज वेल. दे डू नॉट गिव freedom to the management. They hire for the projects or the products. So Contour does not do that. They do not try to micromanage us. And और ये एक ऐसी value है, I have used that value in my team as well. I do not try to micromanage. I trust, and I delegate my task. बिल्कुल ठीक है. Delegate tasks to my team lead. Tell them what we need to do, what ETAs we have for a certain enhancement or a project within this product, and we do it within the timeline, just because we trust each other. And we know each other's working habits as well. बिल्कुल. ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी वैल्यू ऐड करती है हमारी टीम में भी as well. And you feel a sense of autonomy and ownership, na? Exactly. And you feel that you feel competent, you want to do more. Exactly. और क्योंकि जब भी हम ट्रस्ट करते हैं किसी पे, तो it means के we are kind of making that person do self accountability as well. Because if you do not trust, so no one will be able to perform. So trust is something, if it's not there, we cannot achieve anything. Fantastic. We have a question for you, which is coming from another guest. That guest doesn't know कि ये सवाल आपके पास आ रहा है और आपको नहीं पता है कि ये किसका सवाल है, लेकिन सवाल बहुत दिलचस्प है. और सवाल ये है that if you could choose one of these 3 things to do in life, what would you do? 1, would you go hiking in South America? 2, would you do skydiving? Or 3, would you stand and sing in front of a huge audience like a concert?
I would go for skydiving. अच्छा They say कि जितनी भी adventures हैं, skydiving is kind of mother of all adventures. ओके क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा हौसला भी चाहिए ओके और there are so many things that can go wrong. हम्म ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी चाहिए अपने आप पे कि you can do it, and you also have to build trust on the equipment that you are using. So there are so many things that can go wrong, and this is something that's most daring. And if you are able to do this, you can do anything. wonderful. Have you always been a goal oriented person? Yes, I think goal जो है या vision जो है, it's very important ठीक है in anyone's life. If you do not have any goal or vision, you will just drift around, and you will never reach your destination. Just like train, if it starts starts from a source and ends the destination, because it's following the route that's already defined. So इंसानों के लिए तो ये चीज़ ट्रू नहीं है. The routes are not defined for yourself. For human beings, you have to create your own route, and that only depends on your vision and the passion you have, or the love of work that you want to do in your life. तो मेरे ख्याल से गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू. और मेरे ख्याल से आमतौर पे हमारे यहाँ जो है गोल्स जो होते हैं, वो इसलिए भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं बिकॉज वी डू नॉट ट्राई टू वर्क ऑन दैम, or we do not plan to work on the goals, or we do not have timelines to work on the goals. Or sometimes you have so many goals, you don't know what goal is important, and you are not able to sort out. So what I have learned is, once you have so many goals on the table, you just pick and choose and put a ठीक है priority and importance against Right. each goal. कि कौन And सा ज्यादा अहम है एग्जैक्टली. और एक गोल को एक वक्त पे फोकस करें. अगर आप ज़्यादा गोल्स को ही फोकस कर लेंगे तो वो नहीं आप अचीव कर पाएंगे. और बिल्कुल एक गोल को फोकस करें, उसके लिए एक टाइमलाइन सेट करें अपने लिए. अच्छा, गोल्स जो है वो रियलिस्टिक भी होने चाहिए, और ख़ास तौर पे उनकी कोई टाइमलाइंस भी डिफाइन होनी चाहिए व्हेन यू वांट टू डू. अगर हमने हमारे कोई टाइमलाइन सेट नहीं की हुई अपने गोल के लिए, तो बिल्कुल हम वो अचीव ही नहीं कर पाते, और बाज़ हम उसको स्टार्ट भी नहीं कर पाते. हम्म तो आमतौर भी होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम ये वाला जो गोल है, या इस पे काम करना है, किसी भी चीज़ पे काम करना है, हम फ्यूचर की कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं. हम कहेंगे जी ये काम हो जाएगा, कंडीशनल सेट कर देते हैं, तो फिर हम ये काम करेंगे. हाँ तो मेरे ख्याल बिल्कुल से काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, या इशू है जो जिससे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो है वो सफ़र करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन. तो उसको ओवरकम करने के लिए यू हैव टू सेट फॉल्स टाइमलाइंस फॉर योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल ये होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, तो उसको लगता है कि आई हैव 1 मंथ टू प्रिपेयर फॉर माय एग्ज़ाम. So he will just relax and twist around, or right waste the entire month, and at the 11th hour they will start scrambling and try to prepare for the exam. तो अगर आपका 1 महीने में एग्ज़ाम है, तो अपने दिमाग को, मेरे ख्याल से एक और कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, जो माइंड ओवर मैटर्स, ये आपको बता रहा होता है, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी. उसमें ये होता है कि यू टेल योर माइंड कि भाई 1 महीने बाद एग्ज़ाम नहीं है, यू हैव एग्ज़ाम आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 2 वीक्स. ठीक है, देन योर माइंड नोज कि भाई यू हैव टू वर्क और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम. बिल्कुल तो यही एक स्टूडेंट के लिए तो ये ट्रू ही है, प्रोफेशनल्स के लिए भी मेरे ख्याल से सेम अप्रोच विल वर्क इफ दे वांट टू गेट रिड ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, और डू वर्क ऑन द गोल्स दे वांट टू अचीव. और मेरे ख्याल से हम जो प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमारे पास तो बहुत सारे गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं. बिल्कुल खासतौर पे हमारे जो न्यू फीचर्स हमने डेवलप करने होते हैं प्रोडक्ट में, वी ऑलवेज एस्टिमेट, और हम फिर उसके एस्टिमेट के मुताबिक जो है वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द Right. प्रोजेक्ट्स और द एनहांसमेंट्स दैट वी डू, Right. और वी स्टार्ट टू डिलीवर विद इन दोज एस्टिमेट्स. मेरे ख्याल से रियल टाइम में भी ये, और या रियल लाइफ में भी हमेशा ये चीज़ काबिल अमल हो सकती है कि आप जो भी गोल सेट करें, उसको एस्टिमेट करें कि आप कब स्टार्ट करेंगे और कब इसको फिनिश कर लेंगे, जस्ट टू बी एबल टू कंप्लीट द फर्स्ट गोल एंड मूव टू योर नेक्स्ट गोल. Absolutely. Arfan, we can talk for hours, but it is time to wrap up this conversation. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Thank you so much for your time. Thank you very much. Ladies and gentlemen, that's it for today. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, saying thank you and Allah Hafiz.